Welcome Pragmatism on India's G20 presidency. India, during its presidency of G20, needs to bring all nations in line with its vision. The Hindu Editorial, November 17, 2022. Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments. With the handover of the gavel from Indonesian President Joko Widodo, Prime Minister Narendra Modi took over leadership of the G20 process on Wednesday, which will position India at the helm of forming consensus among the most advanced economies over the next year. India's presidency, which begins on December 1, comes at a time when the world faces economic hardships and global recessionary trends. In addition, the political polarization between the US and European Union and Russia, all G20 members, will make every meeting that India will host fraught with tensions. But the G20 summit in Bali provided some positive signals. Despite fears that G20 members would fail to produce a joint statement, Sherpas of each delegation persevered to reach a 17-page consensus document. Expectedly, there was trouble over the paragraphs on the Russia-Ukraine conflict. India's role in tempering some of the language during the negotiations has been highlighted, and Mr. Modi's phrase at the SCO summit in September, that this is not an era of war, was included in the final statement. The majority of the G20 leadership was not in favor of equivocating on the conflict, as India and a few other countries have been doing, and the joint communiqué said that most members strongly condemned the war in Ukraine. It was a positive sign that while Russia protested the statement, its foreign minister Sergei Lavrov was present, and President Putin's absence actually contributed to a more manageable summit for Indonesia. The fact that Mr. Modi also extended his hand to Chinese President Xi Jinping during the banquet is in contrast to their stony demeanor at the SCO summit in September and could signal a thaw in talks between them for the first time since the LAC standoff began in 2020. While Mr. Modi may have to explain the shift domestically, his decision to speak to the Chinese president also reflects the practical reality that India, as host of the G20 and the SCO in 2023, will need to ensure the full participation of those groupings, that include rivals such as China and Pakistan. More such pragmatism will be necessary for India in its year of the G20 presidency, with about 200 meetings planned. To achieve this, New Delhi will have to bring on board all countries with its vision for the forum's future, steering the world's economic leadership through this difficult phase, and preparing for future perils including climate change and global warming, food and energy shortages, terrorism and conflict, and bridging the digital divide. Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को गवेल सौंपने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G20 प्रक्रिया का नेतृत्व संभाल लिया, जो भारत को अगले साल सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति बनाने के शीर्ष पर रखेगा। भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया आर्थिक कठिनाइयों और वैश्विक मंदी के रुख का सामना कर रही है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ और रूस, सभी G20 सदस्यों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हर बैठक को भारत की मेजबानी करेगा, जो तनाव से भरा होगा। लेकिन बाली में G20 शिखर सम्मेलन ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए। G20 के सदस्यों के संयुक्त बयान जारी करने में विफल रहने की आशंका के बावजूद प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के शेरपा 17 पन्नों के आम सहमति दस्तावेज पर पहुंचने में लगे रहे। अपेक्षित रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष पर पैराग्राफ पर परेशानी थी।
वार्ता के दौरान कुछ भाषाओं को संतुलित करने में भारत की भूमिका को उजागर किया गया है और सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के वाक्यांश कि यह युद्ध का युग नहीं है को अंतिम बयान में शामिल किया गया था। G20 नेतृत्व का बहुमत संघर्ष को रोकने के पक्ष में नहीं था, जैसा कि भारत और कुछ अन्य देश करते रहे हैं, और संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की। यह एक सकारात्मक संकेत था कि जब रूस ने बयान का विरोध किया तो उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मौजूद थे और राष्ट्रपति पुतिन की अनुपस्थिति ने वास्तव में इंडोनेशिया के लिए अधिक प्रबंधनीय शिखर सम्मेलन में योगदान दिया। तथ्य यह है कि श्री मोदी ने भोज के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर भी हाथ बढ़ाया, जो सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन में उनके पथरीले व्यवहार के विपरीत है और 2020 में एलएसी गतिरोध शुरू होने के बाद पहली बार उनके बीच बातचीत में गर्माहट का संकेत दे सकता है। हालांकि श्री मोदी को घरेलू स्तर पर बदलाव की व्याख्या करनी पड़ सकती है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति से बात करने का उनका निर्णय इस व्यावहारिक वास्तविकता को भी दर्शाता है कि 2023 में G20 और एससीओ के मेजबान के रूप में भारत को उन समूहों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी शामिल हैं। G20 की अध्यक्षता के वर्ष में भारत के लिए इस तरह की और व्यावहारिकता आवश्यक होगी, जिसमें लगभग 200 बैठकों की योजना है। इसे हासिल करने के लिए नई दिल्ली को मंच के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ सभी देशों को साथ लाना होगा। इस कठिन दौर के माध्यम से दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, भोजन और ऊर्जा की कमी, आतंकवाद और संघर्ष सहित भविष्य के खतरों के लिए तैयारी करना और डिजिटल विभाजन को पाटना। Subscribe our channel, The Hindu Editorials, for more upcoming new videos. Like, subscribe, share and comments.